Yeah, hello my dear children. Hope all of you are fine. As you all know that our school has started with online classes or online sessions. So myself Ravinder Kaur, today I am going to start with first class and I am going to teach you social studies. So yeah, this is the textbook which I am referring. Hope all of you are having this textbook. If not, contact with the management. It is available at our school campus and you can purchase it. Yeah, so all of you, I want you to take out page number 105. This is the first lesson, social studies, and lesson name is about me. I know for the first class student it is not possible for you that you can understand everything if I'm going to explain you in English. So in between I'm going to use Hindi language also so that it is possible or it is easy for you to understand whatever I am explaining. Is that clear? So let us begin our first session, first lesson, social studies. Okay, about me. It is nothing but about me. जब आपने अपने बारे में बोला और you need to explain about yourself. Not even explanation, just whatever the information is given over here, you need to fill up this information. Example, suppose this is a class. Okay, I am your teacher. Yes, of course this is a class and I am your teacher, and imagine just you are having 20 different students with you. Okay, and this is our first class. As I even I don't know about you and you also don't know about me. So this is my first class, and when I enter in the class, okay, when I enter in the class, after all the good morning wishes and all, one by one I will ask you, what is your name? Isn't it? What is your father's name? What is your mother's name? So it is nothing but the introduction of yourself. Is that clear? So this about me is nothing but your identity, giving your identity to the one who is asking. Example, this is a student one. Okay, and I'm saying, hello beta, good morning, what is your name? So what you will say, my name is so and so. Is that clear? Which class do you study? What is your father's name? These are few examples. जैसा आप या कभी अपने रिश्तेदार के घर पे जाते हो या सामने आप कहीं भी बाहर निकलते हो तो आपको कोई भी अननोन पर्सन मिलता है तो आपसे सबसे पहला वो यही सवाल करेगा कि आपका नाम क्या है. Isn't it? तो आप अपना नाम बोलोगे. और ऐसा ही नहीं, आपकी क्लास में जो 20 स्टूडेंट्स है वो सारे 20 स्टूडेंट्स के अलग अलग नेम्स होते हैं. अगर सबकी नेम्स सेम हो तो it is very difficult for you to identify them. So each and every child will have a different name. So that name is nothing but it will give you identity. एग्जाम्पल के लिए आप आधार कार्ड देख लो, आपके आधार कार्ड पे भी आपकी आइडेंटिटी होती है. योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, योर नेम, योर फादर्स नेम. इजंट इट? This is nothing but that is your identity card. Similarly, so our first lesson is about me. Okay, so nothing is there that you have to do. You just need to fill up your identity which is given over here. So first one, fill in this identity document about yourself. When you have done this, show your card to your friends or your parents. Is that clear? So page number 105, identity document. First one is my name is. Okay, what is the question they are asking? My name is. So what is your name? Okay, everyone will call you with your name. Your parents will call you with your name. कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही ना आपका. बस वही नेम आपको यहाँ पे लिखने का है. Suppose my name is Rahul. So in this column, when you are going with what is your name, you're going to write my name is Rahul. This is just an example. Okay, you don't need to write the exact name. You people need to write your name. What is your name? Is it clear? My name is Rahul. Second one क्या है? I am a boy slash girl. Whether you are a boy or you are a girl. So if you are a boy, in this dash you need to write boy. If you are a girl, again in the dash you need to write girl. So Rahul is a boy. Yes, again boy. Okay, I am 5, 6, 7 years old. This comes here your age.
how much old you are, whether you are 1 year old, 2 years, 3 years, 4 years. So here three options are given, 5, 6 and 7. So whatever is your age, you need to write over here. I am 6 years old. Okay. Next, color of my hair is dash. What is the color of your hair? So you can see example over here. This is my hair and my hair is black color. Similarly, आपको भी अपने हेयर का कलर लिखने का है, whether it is black or whether it is brown or whatever color it is. So I am writing here black. Color of my hair is black. Next, color of my eyes is. These are your eyes. कहाँ है आपके eyes? These are your eyes. So आपके eyes के अंदर की ये जो है ना balls like structure, उसका कलर क्या है? Whether it is a black color, whether it is a brown color or whatever color is that. So here I am gonna write my eye color is black. So I will write over here black. तो इसमें आपको आपका कलर क्या है, आपके आईज का कलर क्या है, वो आपको लिखने का है. नेक्स्ट इज व्हाट, आई लिव इन डैश सिटी. सो प्रेजेंटली आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो सिटी का नाम क्या है? ओके, वो सिटी का नाम क्या है? हैदराबाद. वेयर डू यू स्टे? हैदराबाद. सो नेक्स्ट आई विल राइट व्हाट, हैदराबाद. Okay, again next, I study in class 2, 3 or 1. Which class do you study? Yes, I am explaining this session for first class, so it means you are studying in class 1. Class 1. Okay. Next, I go to school, office, park. Yes, you people, where you will go? आप सुबह उठते ही सबसे पहले, अभी तो फिलहाल ये लॉकडाउन चल रहा है या जो भी है, आप घर पे बैठे हैं पैंडेमिक की वजह से, लेकिन जैसे ये खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले आप सुबह उठ के आप कहाँ जाते हो? स्कूल जाएंगे ना, है ना? आपके पापा ऑफिस जाएंगे. ओके, सुबह सुबह उठ के पार्क थोड़ी ना हम कहीं कोई भी जाता. तो आप लोग रेडी होके अर्ली इन द मॉर्निंग विथ योर बैग्स, वेयर यू विल गो टू स्कूल. सो हियर इन द 8th one you will write I go to school, and here I am writing school. Next, the name of my school is. I know this, you know it very well. So the name of your school is what? LMG Smart Kids International High School. So your school name you are going to write over here. Next, my birthday falls on. It means your birth date. So I know whenever you will celebrate your birthdays, isn't it? आपका बर्थडे जब आता है, आप चॉकलेट्स लेके आते हो, न्यू ड्रेस पहन के आते हो, आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, घर में भी सेलिब्रेट होता है, केक कटिंग भी होता है, एवरीथिंग, isn't it? सो वो सेलिब्रेशन क्यों है? क्योंकि वो उस दिन आपका बर्थडे है. सो बर्थडे मीन्स इट्स नथिंग बट जो बर्थडे आपका जिस डे पे आया, कौन से दिन में आया, उसको क्या बोलते हैं? बर्थ डेट. सपोज आज मेरा बर्थडे है, सो आज क्या डेट है, वो डेट आपको लिखने का है. एग्जाम्पल के लिए राहुल का बर्थडे 4th अगस्त को है. सो 4th अगस्त में राहुल की बर्थ डेट क्या रहेगी? 4th अगस्त. एंड विच ईयर, कौन से ईयर पे आप पैदा हुए या आपका जन्मदिन मनाया जाता है. सो विच ईयर, कौन से ईयर पे आप पैदा हुए, इट मीन्स इट इज वेदर 2001 और 2000. सो 4th अगस्त 2001. So this is what, this is your birth date. Definitely ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2001 को ही हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता. अगर वो 2002 आ गया या अब 2020 चल रहा है तो ये साल पे आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. जस्ट अगर हर साल के 4th अगस्त को राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, वैसा ही अगर हर साल आपकी जो बर्थ डेट है तो वही डेट पे आपका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है. इज इट क्लियर? Is it everything is clear? So yeah, with this we have completed our first identity document, and over here you need to paste your photograph. Okay,
आपकी फोटोग्राफ, आपको पूरी, सब बच्चों का काम है कि आप पूरी अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिखिए. यू कैन टेक योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल एज योर ट्यूशन टीचर. इज दैट क्लियर? सो आपको पूरी आपकी डॉक्यूमेंट या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पे आपको फोटोग्राफ भी चिपकाना है, आपकी अकेले की फोटोग्राफ. Is that clear? I hope this is very useful for you. So yeah, in the next class I'm going to teach you with another subject, or you can say with whichever the leftover part is over here. I'm going to teach you with other parts. Yeah. Till today, this is your homework. Okay. You need to fill this identity document, paste the picture, and complete your syllabus. Yeah, and complete your first lesson. So हाँ जी. And I know for the first class students it is not easy for you कि आप अपने आप से लिखेंगे. So I request the parents also to please उनकी हेल्प कीजिए और उनके हैंड राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लास में बैठना, बच्चों के बीच में बैठना, टीचर्स का समझाना वो एक अलग रहता है. लेकिन अब वो बच्चा घर पे है तो घर पे फिर भी आप उनके हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए ताकि वो नीट हैंड राइटिंग में अपनी ये सारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें. So meet